Okay, now I'm going to share the screen. Okay, I think the screen is visible to everyone. Okay, I think this is the last slide that we done in the previous lecture. Okay, let's start with the today's topic. Okay, the next topic is the denial of service attack. A denial of service attack is a type of cyber attack in which a malicious actor aims to render a computer or other device unavailable to its intended users by interrupting the device normal functioning. DOS DOS means denial of service attack. DOS attacks typically function by overwhelming or flooding a targeted machine with requests until the normal traffic is unable to be processed, resulting in a denial of service to additional users. A denial of service attack is characterized by using a single computer to launch the attack. Now, this is the denial of service attack. What is denial of service attack? Means suppose there is a network. Here we have a server and the number of clients. The number of clients, they send the request to the server. The server find out the request and revert with the solution. Clear? Suppose in a network, we maintain a network. The capacity of the server is to handle 100 queries at the same time. What is the maximum value? The 100 queries at the same time. When intruder or a hacker करेगा क्या अब इसमें? Hacker sends the number of requests towards to the server. It sends more than 100 requests. Whenever more than 100 requests they are arriving at the server side, the server is overwhelmed means the server goes exhaust, because server क्या है, वो एक टाइम पे 100 क्वेरीज को हैंडल कर सकता है. इंट्रूडर क्या करेगा, उस सर्वर के ऊपर मोर देन 100, सपोज 150 और 200 क्वेरीज सेंड कर देगा. नाउ द सर्वर गोज एग्जॉस्ट. जब सर्वर एग्जॉस्ट हो जाएगा, इट स्टॉप्स इट्स नॉर्मल वर्किंग. वो अपनी नॉर्मल वर्किंग बंद हो जाएगी उसकी, बिकॉज उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी वो रीच कर गई. अब होगा क्या, जितना टाइम सर्वर को रीस्टार्ट होने में लगेगा, सपोज इट रिक्वायर्स 10 मिनट टू रीस्टार्ट, तो व्हाट इट मींस, जितने भी बाकी क्लाइंट्स हैं वो जितने टाइम भी उन 10 मिनट्स में जितनी भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट उस सर्वर को सेंड करेंगे, सर्वर उनका रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. वो जितना टाइम उसको रीस्टार्ट होने में लगेगा. जब रीस्टार्ट होकर सर्वर फिर रिफ्रेश होगा, देन ही इज एबल टू accept the number of queries from the client side. तो what it means, as the name implies, denial of service attack. जो सर्विसेज हैं उनको डिनाइल कर देना, उनको बंद कर देना. क्लियर? हैकर उसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर सिस्टम एग्जॉस्ट कर जाता है. जब सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा. क्लियर? दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. और जितना टाइम वो उसको रिफ्रेश होने में लगेगा या रीस्टार्ट होने में लगेगा, उतने टाइम में हैकर उस नेटवर्क में एंटर करके डेटा को कैप्चर करके नेटवर्क से बाहर चला जाएगा. और जब सर्वर रीस्टार्ट होगा तो सर्वर को भी पता नहीं लगेगा कि कोई हैकर अंदर एंटर किया था. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, हाउ डज अ DOS, denial of service attack, works? The primary focus of a DOS attack is to oversaturate the capacity of the targeted machine, resulting in denial of service to the additional request. The multiple attack vectors of DOS attack can be grouped by their similarities. अब how it works, अभी हमने वर्किंग डिस्कस कर लिया. होता क्या है, प्राइमरी फोकस यही होता है कि उसको ओवर सेचुरेट किया जाए, ओवर सेचुरेट या उसको ओवरवेल्म्ड कर दिया जाए उसकी कैपेसिटी से ज्यादा. जब कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो इट स्टॉप्स वर्किंग, इट कंफ्यूज इन नंबर ऑफ क्वेरीज.
वो नंबर ऑफ क्वेरीज में कंफ्यूज हो जाएगा किस क्वेरी को पहले सॉल्व करना है, किसको बाद में करना है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी 100 क्वेरीज की थी एक टाइम पे हैंडल करने की, बट वी गिव और द इंट्रूडर गिव 200 क्वेरीज टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम. Clear? Now, the DOS attack typically fall into the two categories. We have the two different categories where the DOS attack can be fall. The first is buffer overflow attack. An attack type in which a memory buffer overflows can cause a machine to consume all available hard disk space, memory, or the CPU time. This form of the exploit often results in the sluggish behavior, system crashes, or other deleterious servers behaviors, resulting in denial of service. वही buffer flow मतलब buffer flow means we have a number of space is given. अब जितनी number of queries को send कर दी जाएगी वो सारी स्पेस सेम टाइम पे यूज कर रहा होगा, ऑल द मेमोरी, ऑल द डिस्क स्पेस, ऑल द सीपीयू टाइम. तो उस केस में होगा क्या, वो एक्सप्लॉइट हो जाएगा, ओवर सेचुरेटेड हो जाएगा एंड क्रैशेस, वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा. अब वही पुरानी बात, जितना टाइम वो सिस्टम क्रैश करने के बाद रीस्टार्ट करने में लगेगा, सपोज इट रिक्वायर्स 10 मिनट, उसमें दो काम हो जाएंगे. पहला काम, वो 10 मिनट किसी भी क्लाइंट की क्वेरी को वो हैंडल नहीं कर पाएगा बिकॉज सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है. सेकंड, उन 10 मिनट्स में इंट्रूडर जो है वो नेटवर्क में एंटर करेगा, नेटवर्क का जो सस्पिशियस जो सेंसिटिव डेटा है उसको कैप्चर करेगा और उन 10 मिनट्स में सिस्टम से बाहर हो जाएगा. तो व्हाट इट मींस, ना तो क्वेरीज हैंडल हुई और हमारा डेटा जो है वो इंट्रूडर हैक करके भी ले गया. क्लियर? द फर्स्ट वन इज बफर ओवरफ्लो, जब उसकी बफर को ओवरफ्लो कर दिया जाए, कैपेसिटी को. सेकंड, फ्लड अटैक्स, by saturating a targeted server with an overwhelming amount of packets, a malicious actor is able to oversaturate server capacity, resulting in denial of service. In order for most DOS flood attacks to be successful, the malicious actor must have more available bandwidth than the target. ये वही पुराने वाला आ गया. फ्लड अटैक मींस नंबर ऑफ पैकेट्स का फ्लड के रूप में नंबर ऑफ पैकेट्स को सेंड कर देना सर्वर की तरफ. Server is able to handle the 100 packets at the same time or the 100 queries, but we send the 200 queries. The simple example is, suppose someone gives you the assignment of one subject, और जैसे मैंने तुम्हें आज असाइनमेंट दी तो मैंने कहा कल मेरे को इसको फिनिश करके कल सबमिट करवानी है तुम लोगों ने, एंड इट कंटेन्स द 10 क्वेश्चंस. स्टूडेंट सेज ओके सर कल तक हो जाएगी. ऑल द 5 टीचर गिव यू द सेम टाइम ऑफ असाइनमेंट, भाई 5 असाइनमेंट आज ही लो और हम लोगों को कल सबमिट कराओ. व्हाट इट मींस, ओवर सैचुरेटेड हो जाओगे तुम लोग, पूरा दिन लगे रहोगे उन असाइनमेंट्स को बनाने में, फिर भी कंप्लीट नहीं होगी. होगा क्या, कभी सब्जेक्ट ए की असाइनमेंट बना रहे हो, माइंड में चल रहा है बी की पेंडिंग है, फिर बी की तरफ चले गए, यार अभी तो सी की भी पेंडिंग है, देन गोइंग ऑन टू सी, डी भी पेंडिंग है, ई भी पेंडिंग है, तो ओवर सैचुरेटेड हो जाओगे. सेम विद दिस, अब ओवर सैचुरेटेड हो गए तुम लोग, क्या करोगे, कोई और काम आ जाएगा नया, वो तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होगी, जो 5 असाइनमेंट्स मिली है. तो पहला काम क्या होगा, बाकी की क्लाइंट्स को तुम लोग उनके उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, रिवर्ट नहीं कर पाओगे. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. सर्विसेज को डिनाइल कर देना. डिनाइल मींस डिस्प्यूट कर देना, सिस्टम को क्रैश करके उन सर्विसेज को बंद कर देना. This is all about the denial of service attack, and it can be fall into the two categories: buffer overflow and flood attack. In the case of buffer overflow, we have the memory space. Whenever all the memory can be used at the same time, no other query can be handled because all the memory or all the hard disk that is available, it is used by the previous number of equations or the previous number of queries उनके साथ busy. And second is the flood attack. Flood attack means the number of packets, the n number of packets can be sent towards the server side, वो जिनको हैंडल ही ना कर पाए. Clear? This is all about the denial of service attack. Okay, this is the diagram. DOS means server की तरफ the number of equations or number of queries को send करना, that is denial of service attack in the first diagram. And the second one is distributed denial of service attack. We have the two categories: denial of service attack and distributed. The difference is only one. In the case of distributed, the number of systems are involved. In the case of denial of service attack, only the one system or the one hacker, from using a one system, it sends the number of queries towards to the server. But when we talk about the distributed denial of service attack, the number of hackers from the number of different users, number of different systems,
This sends the queries towards to the server. That's why its name is distributed. They are distributed in nature. Clear? Okay, the next, defenses against denial of service attack. The attacks are also difficult to protect against because it's hard to distinguish requests that are the part of the attack from those of the legitimate users. Legitimate means the the legal users, the authorized users. Clear? IT workers have three tools at their disposal when it comes to defending against the denial of service attack. Working with the internet service provider, that is called ISP, to block the attack before they reach the target network. The first one is to block the attack before they reach the target. उसको वहां पहुंचने से पहले रोक लेना. Filtering them at the network border, जहाँ पे नेटवर्क का बॉर्डर है, जहाँ पे फायरवॉल्स लगाते हैं हम लोग, तुम लोगों को पता होगा, वहां पे फिल्टरिंग कर देना. फिल्टरिंग मींस नंबर ऑफ पैकेट्स की फिल्टरिंग करनी. वन बाय वन पैकेट्स को चेक करना. जो पैकेट्स ऑथराइज्ड है उसको एक्सेस दे देना. जो पैकेट ऑथराइज नहीं लगा उसको डिनाई कर देना. उसको नेटवर्क में एंटर नहीं होने देना. थर्ड वन इज एंड डिप्लॉइंग sufficient capacity to simple observe the attack. And third one is कि sufficient networking equipments ऐड कर देने अपने नेटवर्क में, ताकि वो जितना भी अटैक को ऑब्जर्व कर जाएं. अब ये 3 पॉइंट आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे तुम लोग. क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? यू ऑल आर ऑन अनम्यूट मोड. ठीक है? whenever any query or any topic that is not clear to you, तो सेम टाइम पे अनम्यूट योरसेल्फ और क्वेश्चन पूछ सकते हो. क्लियर? ओके. Okay, that's good. Now let's start with we have defenses against the denial of service attack. Means we know, suppose we are working in a network and we know one attack is there, that is called the denial of service attack. But how to prevent this attack? We have the three different methods. Now the first method is the first line of defense. Clear? First method is the first line of defense. The most effective way to protect against the impact of denial of service attack is to stop them before they even reach a company's network. हमारे नेटवर्क पे पहुंचने से पहले ही उसको रोक देना. ये फर्स्ट टेक्निक होगी. दिस मींस पार्टनरिंग विद द contracted ISP to block the attack at the gateway. This means we contract with the ISP. ISP is Internet Service Provider. जहाँ से जिसका इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, we tie up with that company and that company is responsible for filtering these packets. हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज वो कंपनी का नेटवर्क हम लोग यूज करेंगे. होगा क्या, वो पहले नेटवर्क में एंटर करेगा, उस नेटवर्क के थ्रू हमारे वाले पर्सनल नेटवर्क में आएगा. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? द ISP इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड दीज पैकेट्स. क्लियर? This blunts their impact by protecting even network border devices from being overwhelmed by the flood of the malicious traffic. अब उसमें क्या था? फ्लड अटैक पढ़ा था हम लोगों ने. होगा क्या डिनाइल ऑफ सर्विस में? वो क्या करेगा? द नंबर ऑफ पैकेट्स सेंड्स टुवर्ड्स अवर नेटवर्क. बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कंपनी जो होगी वो क्या करेगी? द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बना लेगी. इन दैट केस that company is responsible for filtering out these packets. Now it check all the packets one by one. The authorized packets can be assessed or granted into the network, or that the packets that are not authorized or that contain some suspicious material, they can be stopped at that particular site. वो उन पैकेट्स को वहीं पे रोक देगा. Clear? Okay. Many ISP often a clean pipes service level agreement that commits to a granted bandwidth of a legitimate traffic rather than just the total bandwidth of all the traffic. What it means, the total bandwidth that is given to your network, out of these total bandwidth, some bandwidth is used by the clean pipes. They offer a clean pipe. It is a service level agreement. What it means, now these clean pipes, they are responsible for filtering all the packets that come towards our network. वो उन सभी को फिल्टर आउट करेगा. जिसमें सस्पिशियस मटेरियल होगा उसको ड्रॉप कर देगा. जो ऑथराइज लगेंगे उनको ग्रांट कर देगा. ग्रांट करने का मतलब प्रोसीड टुवर्ड्स अवर नेटवर्क. क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. द नेट शेल इज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेट शेल इज, इसमें क्या होगा? हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर
वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे नेटवर्क पे आएंगे उनको फिल्टर आउट करेगा, जिसमें सस्पिशियस मटेरियल लगेगा उसको ड्रॉप कर देगा, जो ठीक लगेगा उसको पास ऑन कर देगा हमारे नेटवर्क पे। अब होगा क्या, सपोज 100 पैकेट्स आए थे, उनमें से 70 उसने ड्रॉप कर दिए। अगर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो जाए हमारे नेटवर्क पे तो सस्पिशियस मटेरियल देके 70 ड्रॉप कर देगा, सिर्फ 30 भेजेगा। हमारी कैपेसिटी 100 की थी तो हम लोग 30 इजीली मेंटेन कर लेंगे। क्लियर। और जिस मेथड को वो यूज करता है, इट ऑफर्स द क्लीन पाइप्स, दैट इज अ सर्विस लेवल आर्ग्यूमेंट एग्रीमेंट है जिसमें वो क्लीन पाइप्स हैं। क्लीन पाइप्स का मतलब क्या है, दे आर बेसिकली दे आर यूजिंग सम बैंडविड्थ ऑफ अ लेगिमेट ट्रैफिक। लेगिमेट ट्रैफिक मींस द लीगल ट्रैफिक। द लीगल ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब होगा जो पैकेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, द लीगल ट्रैफिक दैट कम्स टुवर्ड्स अवर नेटवर्क। क्लियर। इफ एनी इश्यूज देयर तो बताओ, अदरवाइज वी गो फॉर द सेकंड। Okay, just wait for a minute. That's good. Okay, now the second. The second one is border filtering. Keep out the bad connections. Second one is border filtering. Means now the filtering is there, but the filtering is done at the border side. Border means the border of our network. Clear? Business should also consider deploying specialized DOS protection devices to further guard their networks against attack. These devices sit at the network parameter and process traffic before it reaches the internal network, filtering out potentially malicious activity. Now, in this case, we are using the number of we are using the number of devices that are work against the denial of service attack, and these devices can be deployed at the border of our network. Now, these devices can filter out the each and every packet. The method is same. If any packet that contains the malicious activity, the packet can be dropped by these devices. If a packet is normal, this the sender of this packet is normal, the path is normal, and the destination address is normal, everything is normal in the packet, that the packet can be granted towards to the network. Clear. They must be used in conjunction with the clean pipes. Now they also work conjunction with the clean pipes, and that clean pipes can be given by the ISP, internet service provider. Clear. ISP services or as a standalone solution when ISP protection is not available. They work with the ISP. ISP service is clean pipe. If the ISP service is not available, वो सिंगल ही काम करते रहते हैं। वो डिवाइसेस जो हमने नेटवर्क पे लगाए हैं, नॉर्मली दे वर्क इन द congestion with the ISP service of clean pipe. If the service of clean pipe is not there, no issues. This the only standalone solution is there. They singly work at the border of that particular networks. Clear. Solutions in this category include, now the solutions को इस category जो है वो checkpoints. They have the different checkpoints over the border. The denial of distributed denial of service protector, how to protect these, and Radware Defense Pro. Basically, these are the methods or these are the solutions that can be used at the border filtering. Clear. Anything else? Okay, this is the second method. Clear. नेटशेल बता देता हूँ। नेटशेल क्या है इसका, हम लोग क्या करते हैं, वी हैव द नंबर ऑफ डिवाइसेस, वी डिप्लॉय दीज डिवाइसेस एट द बॉर्डर ऑफ आवर नेटवर्क। नाउ द फिल्टरिंग इज डन एट द बॉर्डर साइड। बॉर्डर पे फिल्टरिंग हो गई, मतलब हमारी तरफ नहीं होगी। हमारी तरफ क्यों नहीं होगी, बिकॉज हमारी तरफ वो होगी जो एंटर कर जाएगा, बॉर्डर पे फिल्टरिंग हो जाएगी। एंड द फिल्टरिंग कैन बी डन बाय द डिफरेंट डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस कैन वर्क along with the ISP service, that is clean pipes. वो दोनों मिलके काम करते हैं। इफ द क्लीन पाइप इज नॉट देयर, वो अकेले भी काम करते रहते हैं। काम क्या करते हैं, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ पैकेट्स जितने भी नेटवर्क पे आएंगे। पहली बात एक और चीज समझ लो, जब भी पैकेट कोई रिसीव होता है, पैकेट कंटेन्स द थ्री थिंग्स, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द डेटा। वो सोर्स एड्रेस चेक करते हैं, लेगिमेट यूजर से आ रहा है। डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करते हैं, लेगिमेट यूजर मतलब लीगल यूजर है हमारे सर्वर में जिसके पास जा रहा है, और डेटा क्या है उसके पास, कोई सस्पिशियस डेटा तो नहीं है। तो इस लेवल पे फिल्टरिंग होती है। जो तो क्लियर होते हैं पैकेट्स, उनको वो ग्रांट कर देते हैं, दैट कम्स टुवर्ड्स अवर नेटवर्क।
और जिनमें सस्पिशियस मटेरियल होता है उनको वो डिनाई कर देते हैं. क्लियर? नाउ थर्ड, observing DOS attacks. No phasing this network. Third one is observing. Let's start. Absorption, the final DOS protection strategy, attempts to prevent an attacker from using all accessible resources by making available more resources than the attacker is able to consume. This involves purchasing sufficient network bandwidth and server and device capacity to observe the significant level of traffic over and above the typical traffic profile. What it means, एज द नेम, ऑब्जर्व कर लेना. ऑब्जर्व मतलब अटैक होगा, उस अटैक को हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे. अब ये जो अटैक होगा ना, वो पहला था फर्स्ट लाइन पे, दूसरा था बॉर्डर फिल्टरिंग पे, जो थर्ड है वो इनसाइड द नेटवर्क होगा, जब नेटवर्क में वो एंटर कर जाएगा. अब होगा क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या करते हैं, जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको ओवर सेचुरेटेड करके या ओवरवेल्म्ड करके उनकी सर्विसेज को बंद कर देते हैं. कहता अब इस केस में हमने क्या करना है, जस्ट गो फॉर अ एडिशनल just go for a additional or the sufficient network bandwidth or the devices. What it means, extra bandwidth हमारे पास होनी चाहिए और extra devices होने चाहिए. Suppose we have a two servers of each. We have a 2 print servers, we have a 2 file servers, we have a 2 database servers. Now what will happen, suppose attacker attack on a server. जब एक सर्वर पे वो अटैक करेगा तो उसकी सर्विसेज को बंद कर देगा, बट स्टिल वी हैव अ सेकंड ऑप्शन, अवर वर्क इज नॉट स्टॉप्ड. पर्टिकुलर सर्वर काम करना बंद कर जाएगा, बट वी हैव अ एडिशनल सर्वर ओवर देयर एंड इट कंटिन्यूज द वर्क. तो कंटिन्यू जब वर्क चलता रहेगा तो हमारे सर्वर में क्या, वो हमारे नेटवर्क में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? कौन सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि जितनी नंबर ऑफ क्वेरीज आएंगी वो सेम टाइम पे उनको रिवर्ट करते जाएंगे. क्लियर? मतलब वी गो फॉर परचेजिंग एक्स्ट्रा हार्डवेयर और एक्स्ट्रा बैंडविड्थ. बिकॉज सपोज एग्जांपल्स बताता हूँ, इंट्रूडर इज अटैक ऑन अवर नेटवर्क and the capacity of the intruder is it can attack on a 5 servers at the same time, maximum capacity. Just go for a 6 or 7 servers. What it means, the 5 servers can be hacked by that particular attacker, but still we have the 7 servers. What it means, we left with the 2 servers, we are working with these 2 servers. 5 तो बंद हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा हार्डवेयर था हमारे पास, तो 2 सर्वर्स एग्जीक्यूट करते रहे अपनी वर्किंग को. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द 3 मेथड्स. इनमें कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन मैसेज मी और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ सकते हो. दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 1. यूनिट 1 इट इज कंप्लीटेड नाउ. Okay, if any query is there, so you can unmute yourself. This is all about the unit 1. Okay, I think unit 1 is clear to everyone. Okay, now I'm going to stop sharing the screen now, and now I'm going to share the screen of your syllabus. This is the last topic that is done, this one from the part A. Now the part A is complete. Now we are looking forward towards to the part B. Clear? And this is the first, the intrusion detection. We are today going to cover these topics. What is intrusion detection? What are the different intrusion detection systems? And what is honeypots? Clear? So I'm going to stop sharing that particular part, and I'm going to share the unit B notes. Okay, I think the screen is available, visible to everyone. Now, let's start with the unit B. The topic is intrusion detection. Wait.
Okay, let's start with the unit B. The first topic is intrusion detection. I think we all know what is intrusion. Uh, Ankita, unmute yourself. Yes, sir. Good afternoon. Ankita, good afternoon. Ankita, what is intrusion detection? So I don't know. Okay, what do you mean by intruder? सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. अभी तो हमने मेरे ख्याल से लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है इंट्रूडर हैकर्स दे आर द सर सेम. सर लास्ट लेक्चर मैंने लगाया नहीं था. ओके ओके, नो इश्यूज, म्यूट योरसेल्फ. ओके, जानवी अनम्यूट योरसेल्फ. जानवी शर्मा. ओके, नो इश्यूज. रवनीत कौर. रवनीत, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. Good afternoon. गुड आफ्टरनून रवनीत. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रूडर? हु इज इंट्रूडर? सर इंट्रूडर जो वो होता है जो मतलब कि अटैक करता है बिल्कुल. हमारे हाँ हैकर लाइक हैकर्स. हाँ, हैकर्स और अनऑथराइज्ड पर्सन. हाँ जी. ठीक है, और गुड. Okay, mute yourself. And intrusion means some activities performed by the intruder. This is called intrusion. Some activities performed in our network by unauthorized person is called the intrusion. Now, and the intrusion detection is to detect these activities. Clear? पहला टॉपिक जो है वो इंट्रूजन डिटेक्शन है. इंट्रूजन डिटेक्शन का मतलब है इंट्रूजन को फाइंड आउट करना. इंट्रूजन होती क्या है? वो एक्टिविटीज जो इंट्रूडर करेगा. इंट्रूडर कौन है? अनऑथराइज्ड पर्सन. सपोज नाउ वी हैव अ क्लास. तो हमारी क्लास में तुम सारे ऑथराइज्ड हो गए बिकॉज यू ऑल आर द पार्ट ऑफ द एमसीए सेकंड सेमेस्टर. someone who is not belongs to MC second semester is an intruder for us. If he or she can perform any activity in our WhatsApp group, तो वो हो जाएगी इंट्रूजन और उसको डिटेक्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड द इंट्रूजन डिटेक्शन. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. द this is the intruder. One of the most publicized attacks to security is the intruder, generally referred to as a hacker or cracker. Three classes of the intruders are as follow. Clear? Means the unauthorized person who is not authorized, who is a cracker or who is a hacker is called an intruder. And we have the three types of intruders are there. The first is masquerader. Masquerader कौन है? An individual who is not authorized to use the computer and who penetrates a system access controls to exploits a legitimate user account. Just wait for a minute. Okay, the first one is masquerader. Masquerader होता क्या है? An individual who is not authorized, जो authorized नहीं है, but to use a computer and who penetrates a system access controls to exploit a legitimate user account. जो authorized नहीं है लेकिन फिर भी उस system को access कर रहा है, that system belongs to a legal user. जो legal user को belong कर रहा है उसकी activities को perform कर रहा है, that is called masquerader. Clear? Second, misphaser. A legitimate user who legitimate means a legal. A legitimate user who access data, programs or resources for which such access is not authorized or who is authorized for such access but misuse his or her privileges. अब मिसफीजियर कौन हो गया? अ लेगिमेट यूजर. ऑथराइज्ड यूजर है बट वो कौन से डेटा को यूज करने की कोशिश कर रहा है जिसके लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है. Actually, the user is authorized. That is a part of the network, but he tries to access that part for which he is not authorized.
क्लियर, और जिस पार्ट के लिए वो ऑथराइज्ड है उसका मिसयूज करना, दिस इज कॉल्ड मिसफीजर, क्लियर। थर्ड, clandestine user, an individual who cedes superior supervisory control of the system and uses this control to evade, or evade means to avoid auditing and access control or to suppress audit collections. The third one is clandestine user. Clandestine user कौन होगा? Clandestine user वो है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल को एक्सेस करेगा और ऑडिटिंग को बंद कर देगा। ऑडिटिंग का मतलब है जितनी भी ऑडिटिंग तुम्हारी यूजर्स में हो रही होगी उनको बंद कर देगा, ताकि दैट इज द मेन कंडीशंस और द मेन एक्टिविटीज that can be occur in the system or occur in the network that is not available to the administrator, because auditing को वो क्लोज कर देगा। ये तीन तरह के यूजर्स हो गए, क्लियर। अब लास्ट वाली लाइन से और क्लियर हो जाए, द मैस्कुरेटर इज लाइकली टू बी एन आउटसाइडर। मैस्कुरेटर कौन था? आउटसाइडर था, पढ़ चुके हो ना। द मिसफीजर नॉर्मली इज अ इनसाइडर। मिसफीजर कौन था? जो लेगिमेट यूजर था, लेकिन जिस चीज के लिए वो ऑथराइज नहीं है वो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, और जो जिसकी चीज के लिए वो ऑथराइज है उसका मिसयूज कर रहा है, क्लियर। एंड द थर्ड, क्लैंडस्टाइन यूजर कैन बी, वो इनसाइडर भी हो सकता है, आउटसाइडर भी हो सकता है, बिकॉज वो करेगा क्या, वो किन प्रॉपर्टीज को सीज करने की कोशिश करेगा? सुपरवाइजरी कंट्रोल को। वो आउटसाइडर भी हो सकता है और द लेगिमेट यूजर भी हो सकता है, clear? This is all about what is intruder and the different types of intruders. I just give you the 1 minute, read this slide again. इसमें कोई issue है? intruder क्या होता है? तीन तरह के हैं, कौन सा intruder क्या करता है? तो you can ask me the question. I just give you the 1 minute, just read out this again. Okay, I think everything, this slide is clear to everyone. So we move further. सर थर्ड पॉइंट रिपीट करना। थर्ड है user, क्लैंडस्टाइन। हाँ, क्लैंडस्टाइन यूजर कहता आइदर इट इज अ इनसाइडर और आउटसाइडर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक्चुअल में ये यूजर करते क्या है, ये सीज कर देते हैं सुपरवाइजरी कंट्रोल को। जब सपोज आई एम द क्लैंडस्टाइन यूजर, सुपरवाइजरी कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा एंड दे यूजेस टू कंट्रोल टू इवेड ऑडिटिंग। इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना, वो ऑडिटिंग को अवॉइड कर देते हैं। ऑडिटिंग मीन जो सिस्टम की ऑडिटिंग होती है, एंड असेस कंट्रोल्स, जितने भी असेस कंट्रोल्स हैं वो उनको कैप्चर करके ऑडिटिंग को अवॉइड कर देना, और टू सुप्रेस ऑडिट कलेक्शंस, और जितनी भी ऑडिट कलेक्शंस पड़ी हुई थी ना, जो पहले ऑडिट्स हुई थी, उन सभी को डिलीट कर देना। ताकि ऑडिट का मतलब होता है जो सिस्टम की ऑडिट होती है कि पहले क्या एक्टिविटीज की क्या वैल्यूज थी, अब एक्टिविटीज की क्या वैल्यूज है, क्लियर। तो ऑडिटिंग प्रोसेस को बंद कर देना और ऑडिट कलेक्शन को डिलीट कर देना, ताकि प्रीवियस डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास हो ही ना। जब प्रीवियस डेटा नहीं होगा तो नए वाले डेटा से उसको कंपेयर ही नहीं कर पाएगा, क्लियर। यस सर। Okay, good. Okay, next, the intrusion techniques. The objective of the intruders is to gain access to a system or to increase the range of privileges accessible on a system. यही काम होता है ना इंट्रूडर का, कि उसका सिस्टम का एक्सेस लेना और सिस्टम की एक्टिविटीज को देखना क्या हो रहा है। जनरली दिस रिक्वायर्स द इंट्रूडर्स टू एक्वायर इंफॉर्मेशन दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। वो इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना जो प्रोटेक्टेड है। इन मोस्ट केसेस द इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ यूजर पासवर्ड। नॉर्मली द इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर पासवर्ड की फॉर्म में भी पड़ी होती है हमारे सिस्टम्स में। जैसे जितने भी यूजर नेम और यूजर और जितने भी यूजर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सभी के यूनिक यूजर नेम्स होंगे अलॉन्ग विद द पासवर्ड, जिससे वो सिस्टम में लॉग इन करते हैं। और इन यूजर नेम और पासवर्ड की फाइल्स, एक पर्टिकुलर फाइल भी होती है जो हमारे डेटाबेस में मेंटेन्ड होती है, क्लियर। उस फाइल को भी एक्सेस करना, बिकॉज किसी का भी पासवर्ड मेरे पास आ गया तो मैं उसके लॉगिन से वहाँ सिस्टम में लॉगिन कर सकता हूँ, क्लियर।
Typically, a system must maintain a file that associates a password with each authorized user. If such file is stored with no protections, then it is an easy matter to gain access to it. The password file can be protected in one of the two ways. Keta, suppose we have a number of users in our organizations. They log in with their username and passwords. 100 यूजर्स हैं हमारे, तो 100 यूजर और पासवर्ड की फाइल हमारे सिस्टम में पड़ी होगी. अगर तो विदाउट प्रोटेक्शन हम लोगों ने डेटाबेस में रखी होगी, तो देन इट्स इजी फॉर इंट्रूडर टू गेन एक्सेस ऑफ दैट. अगर हमने पासवर्ड लगाया होगा, सो वी हैव द टू डिफरेंट मेथड्स टू प्रोटेक्ट और टू गिव अ पासवर्ड टू दैट पर्टिकुलर फाइल. दैट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 100 एम्प्लॉइज हैं. 100 में से कुछ एम्प्लॉइज होंगे जिनको रीड ओनली एक्सेस होगा, कुछ होंगे रीड राइट होगा, और कुछ होंगे जिनको रीड राइट डिलीट मॉडिफाई सारा होगा. अब वो यूजर कहाँ से लॉग इन करते हैं? अपने यूजर नेम और पासवर्ड से. अगर वो फाइल मेरे हाथ आ गई, तो भाई किसी भी यूजर के लॉगिन से मैं उस सिस्टम में लॉगिन कर सकता हूँ उस कंपनी में, बिकॉज यूजर नेम एंड पासवर्ड इज अवेलेबल टू मी. So that is a crucial file and that can be protected by some passwords, and we have the two different methods to protect that file. Clear? The first method is one way encryption. The system stores only one encrypted form of user's password. In practice, the system usually performs a one-way transformation in which the password is used to generate a key for the encryption function and in which a fixed length output is produced. What it means, we can encrypt the passwords. Suppose we have the 100 users. Whenever a user enter their password at the first time in the company organizations, and that password is received by the administrator encrypt that password, and वो encrypted password को ही उस फाइल में ऐड करके सिस्टम में रखेगा. The encrypted password is reside in that particular file. Suppose if any intruder can gain access of that particular file by hook and crook, they gain the access to that particular file. Whenever it opens that file, they find out the usernames, but they are the common for everyone. Common means they are the public one. Everyone knows each other's username. But whenever they come to the password is available in the encrypted form. तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. क्यों? बिकॉज उसको नहीं आइडिया हम लोगों ने कौन सा इंक्रिप्शन मेथड लगाया हो. दिस इज द फर्स्ट मेथड कि जो भी पासवर्ड्स हैं, encrypt these passwords and store into the particular file. Clear? And the main thing is every password they have encrypted form, they have the same length. Suppose if we are making a password of 10 characters in the encrypted form, हर एक यूजर के पासवर्ड 10 characters का होगा encrypted form में. Clear? Second, access control. कहता access to the password file is limited to one or very few accounts. अब सेकंड क्या है, जो पासवर्ड फाइल है, जो हमने पासवर्ड फाइल रखी होगी, उसका असेस हम लोग लिमिटेड कर देंगे. लिमिटेड मींस वी ओनली अप्लाई कि दैट फाइल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1, 2 and 3 यूजर्स. नाउ this file is only available for the 3 users whose name is 1, 2 and 3. Any other user who want to access that file is not visible for that person because the access is limited on that particular file. Clear? These are the two methods to protect your password files. And whenever any intruder who comes to your network, their first priority is to find out the username and passwords file. Because कोई भी intruder, suppose basic example करते हैं, we all have our laptops, we have sensitive data in our laptops. कोई भी intruder जब हमारे लैपटॉप में एंटर करेगा तो वो पासवर्ड फाइल को ही रखेगा. बिकॉज सपोज अगर मैंने 10 डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज कर रहा हूँ, हर किसी के लिए मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है और हर किसी का पासवर्ड कहीं ना कहीं पे सेव होगा. जब किसी भी इंट्रूडर के पास वो सारे पासवर्ड्स आ गए, then it's very easy for that person to access all the data that is available in your system. Clear? Any problem till now? Any issue? Just unmute yourself and ask the query. Okay. Okay, now move further. Now, the next is intrusion detection.
फर्स्ट हमने पढ़ा व्हाट इज इंट्रूडर, इंट्रूडर इज अ हैकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रूडर्स। नाउ उसके बाद हमने पढ़ा देन वी द इंट्रूजन टेक्निक्स, देन व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन। An intrusion detection system is a device or a software application that monitors a network or system for malicious activity or policy violations. Any intrusion activity or violation is typically reported either to an administrator or collected centrally using a security information and event management system. कहता हूँ व्हाट इज इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन है क्या? बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम, डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर जो हम लोग अपने नेटवर्क पे लगा लेते हैं। वेन एवर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी कैन बी अकर इन अवर नेटवर्क, तो इट सेंड्स द अलार्म टू द एडमिनिस्ट्रेटर, या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज भेज देता है कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी यहाँ पे अक्कर हुई है, और सेंट्रली इट कलेक्टेड सेंट्रली यूजिंग अ सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और वी हैव द सिक्योरिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर। या ये उसको बता देगा, सेम टाइम पे मैसेज वहां पे चला जाएगा, सम सस्पिशियस एक्टिविटी कैन बी अकर्ड इन आवर सिस्टम, और इट सेंड्स दैट पर्टिकुलर मैसेज टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटर। दिस इज कॉल्ड द इंट्रूजन डिटेक्शन। Means whenever intrusion is occur, there is a system who find out the intrusion and get the message to the administrator or to the that particular software. That name is security information and event management system. Clear? Now intrusion detection system, अब वो सिस्टम होते क्या है, अब उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे, हाउ दे वर्क्स। एन इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम is a system that monitors network traffic, that monitors network traffic। प्रीवियस स्लाइड्स में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे वो फर्स्ट लाइन पे ब्लॉक करना था फिल्टरिंग, या बॉर्डर पे था या इंटरनल पे था, उसमें क्या था, वो फिल्टरिंग करते थे। फिल्टरिंग किसकी करते थे? पैकेट्स की। बिकॉज ट्रैफिक क्या है? पैकेट्स। जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है इनकमिंग पैकेट्स जो हमारे नेटवर्क पे डेटा आ रहा है। आउटबाउंड का मतलब होता है आउटगोइंग पैकेट्स, जो डेटा हमारे नेटवर्क से हम लोग आउटसाइड सेंड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द नेटवर्क ट्रैफिक, आइदर इनबाउंड और आउटबाउंड। क्लियर? An intrusion detection system is a system that monitors the network traffic for suspicious activities and issues alert when such activity is discovered. उसने नेटवर्क ट्रैफिक को एनालिसिस करते रहना है, जब भी सस्पिशियस एक्टिविटी कोई उसको लगी तो सेम टाइम पे ये अलर्ट जनरेट कर देगा। क्लियर? It is a software application that scans a network or a system for harmful activity or policy breaching. Any malicious venture or violation is normally reported either to an administrator or collected centrally using a security information and event management system, that is called SIEM, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। Whenever it discover and that type of activity, it's at the same time it gives the alarm or it sends issues the alert to the administrator or a software, that is called SIEM. Clear? A SIEM system integrates outputs from multiple sources and uses alarm filtering techniques to differentiate malicious activities from false alarm। कहता है ये सिस्टम है क्या, ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट आउटपुट्स का जो डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हैं, और इट यूजेस द अलार्म फिल्टरिंग टेक्निक। अलार्म फिल्टरिंग का मतलब whenever it find out or it discovers malicious activity, at the same time it generate the alarm। जब अलार्म जनरेट होगा तो हम लोगों को लग जाएगा पता कोई प्रॉब्लम आ गई है। सेम इफ यू आर यूजिंग द एंटीवायरस, अगर कोई पेड एंटीवायरस यूज करता है तो तुम लोग क्या करते हो, व्हेनेवर यू प्लग पेन ड्राइव इन योर लैपटॉप्स, सपोज अ वायरस इज देयर, तो सेम टाइम पे वो बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। अगर किसी ने पेड एंटीवायरस यूज किया तो बीप बीप होने, बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। व्हाट इट मींस, वो एंटीवायरस हम लोगों को अलर्ट कर देता है कि सम वायरसेस कम्स इनटू योर लैपटॉप, तो उसको अभी रिमूव कर दो। तो हम लोग उसको स्कैन कर देते हैं, स्कैन करने के बाद वायरस खत्म हो जाता है, तो वो बीप की आवाज बंद हो जाती है। सेम इन द केस ऑफ दिस इंट्रूजन डिटेक्शन पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो जो सिर्फ नेटवर्क ट्रैफिक को कंसंट्रेट करता है। इट फोकस ऑन नेटवर्क ट्रैफिक। whenever a suspicious packets are there, it gives the alarm to the administrator or SIEM system. Clear?
Okay. Although intrusion detection systems monitor networks for potential malicious activities, they are also disposed to false alarms. Hence, organization needs to fine tune their IDS products when they first install them. It means properly setting up the intrusion detection systems to recognize what normal traffic on the network looks like as compared to the malicious system. कहता अब आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या करते हैं, वो मलेशियस एक्टिविटीज को फाइंड आउट करते रहते हैं, बट कई बार क्या होता है वो नॉर्मल पैकेट्स के टाइम पे भी अलार्म जनरेट कर देते हैं. तो कहता है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए व्हेनेवर हम लोग उन आईडीएस को, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को जब इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली इंस्टॉल करवाएं और उनको डिफरेंशिएट कर दें बिटवीन द नॉर्मल ट्रैफिक एंड द मलेशियस ट्रैफिक. कि नॉर्मल ट्रैफिक कौन सी होगी, कैसे नॉर्मल ट्रैफिक का मतलब नॉर्मल पैकेट्स कौन से होंगे, उन पैकेट्स को कैसे फाइंड आउट करना है, सस्पिशियस ट्रैफिक और सस्पिशियस पैकेट कैसे होंगे, दोनों में डिफरेंशिएट पता हो उसको आईडीएस सिस्टम को, तभी सस्पिशियस पैकेट के टाइम पे भी वो बीप अलार्म जनरेट करे. ऐसा ना हो कि नॉर्मल पैकेट्स आए और वो बीप अलार्म जनरेट कर दे. तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करवाना उसको. वो कब, जब हम लोग इस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं अपने नेटवर्क में. क्लियर. Intrusion prevention systems also monitor network packets inbound the system to check the malicious activities involved in and at once sends the warning notification. कहता intrusion prevention system जो है, जो prevent करते हैं इस problem को, they can also they also monitor the network packets inbound. नेटवर्क पैकेट्स इनबाउंड, इनबाउंड तुम्हें अभी मैंने समझा दिया था. इनबाउंड का मतलब है इनकमिंग पैकेट्स. वो सिर्फ उन पैकेट्स पे नजर रखते हैं जो इनबाउंड है, बिकॉज जो नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती. वो आउटसाइड द नेटवर्क जा रहे हैं. प्रॉब्लम कब आएगी, व्हेनेवर अनऑथराइज्ड पर्सन वांट्स टू एंटर इन अवर नेटवर्क. तो वो कब एंटर होगा, जब इनबाउंड पैकेट्स में आएगा. इनबाउंड का मतलब जो पैकेट्स हमारे सिस्टम की तरफ आ रहे हैं. क्लियर. उनमें मलिशियस एक्टिविटीज को चेक करना और वार्निंग नोटिफिकेशंस को जनरेट करना. दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रूजन डिटेक्शन एंड द इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. इफ एनी क्वेरी इज देयर जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और पूछ सकते हो. Okay, let's move further. Now, the next is the classification of intrusion detection system. Classification means the different categories or the different methods of intrusion detection systems are there. The first is host intrusion detection system. ये first आ गया. Host intrusion detection system, that is also called HIDS, HIDS, runs on the independent host. Host means the system or devices on the network. A HIDS monitors the incoming and outgoing packets from the device only and will alert the administrator if suspicious or malicious activity is detected. It takes a snapshot of the existing system files and compares it with the previous snapshot. If the analytical system files were edited or deleted, an alert is sent to the administrator to investigate. An example of the HIDS usage can be seen on the mission critical machines, which are not expected to change their layout. This is the first. The first is host based. कहता है इसमें होता क्या है, we apply that particular system on a particular host. एक host पे उस system को हम लोग deploy कर देंगे IDS को. अब उसका काम होगा incoming और outgoing packets को check करना. इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट्स को वो चेक करेगा. जब भी कोई भी सस्पिशियस पैकेट उसको लगेगा तो एक अलार्म जनरेट कर देगा और एडमिनिस्ट्रेटर को सेंड कर देगा कि भाई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे. क्लियर. और इट टेक्स अ स्नैपशॉट. स्नैपशॉट का मतलब है इट टेक्स अ रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस एक्टिविटीज. पूरे सिस्टम में जितनी नंबर ऑफ फाइल्स हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेरीज हैंडल हो रही हैं या जितना नंबर ऑफ डेटा फ्लो है, वो उसकी एक फाइल बना के रख लेगा. और उस फाइल से करंट फाइल को, करंट फाइल का मतलब है जो करंट पोजीशन होगी तुम्हारे सिस्टम की, उसको पुरानी वाली कंडीशन से या पुरानी वाली जो उसने फाइल का रिकॉर्ड रखा होगा, दोनों को आपस में कंपेयर करेगा. वो दोनों सेम होनी चाहिए. अगर दोनों सेम नहीं होंगी तो सेम टाइम पे ये अलार्म जनरेट करके एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देगा कि सम एक्टिविटीज आर मॉडिफाइड, कि भाई कोई एक्टिविटीज मॉडिफाइड हुई है, कुछ चेंजेस हो गए हैं. क्लियर. और उसने एग्जांपल बता दिए मिशन क्रिटिकल मशीन्स. जैसे जो मिशन क्रिटिकल मशीन्स होती हैं
वो अपनी लेआउट कभी भी चेंज नहीं करती। लेआउट का मतलब है कि जो तुम लोगों ने वैल्यूज सेट कर दी, सपोज तुमने एक C++ का प्रोग्राम बनाया, उसमें जो तुमने वैल्यूज दे दी, तुम लोग उन वैल्यूज को चेंज नहीं करोगे, तुम लोग सिर्फ उसको रन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। तुम क्या करोगे, उसकी एक स्नैपशॉट लेके अपने पास रख लोगे और स्नैपशॉट को कंपेयर करोगे करंट पोजीशन के साथ कि भाई दोनों में कोई चेंजेस तो नहीं है। अगर दोनों में कोई चेंजेस हैं तो इट मींस some suspicious activity can be occurred in your network. Clear? So this is called host intrusion detection system. Next, host clear है सबको? जिसको नहीं क्लियर है अनम्यूट करके पूछ सकता है, अदरवाइज वी मूव फर्दर। ओके, सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे वो DOS डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक था और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक था, जो डिफरेंस उनमें था वही इसमें है। इसमें क्या है, द प्रपोज डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ हिडन मॉनिटरिंग एजेंट्स नॉट अवेलेबल टू द सिस्टम यूजर्स ऑन द नोड्स। अब होगा क्या, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मोर देन वन होंगे। पिछले वाले में क्या था, एक सिस्टम पे होस्ट बेस था, किसी एक होस्ट एक सिस्टम पे उसको रख दिया। अब एक से ज्यादा होंगे एंड दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर यूजर्स, जो किसी को भी पता नहीं होगा कहाँ पे होंगे, बट देयर वर्किंग इज सेम, दे आर मॉनिटरिंग ऑन द ट्रैफिक। वो सारे ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहे होंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग को। whenever same, the working is same, whenever they found any suspicious activity they get the alarm. Clear? The implementation of these elements allow the DIDS detection system to combat not only external, सिर्फ एक्सटर्नल के साथ नहीं, बट ऑल्सो द इंटरनल इंट्रूडर्स हाइडिंग इट्स प्रेजेंस इन द नेटवर्क। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल्स को नहीं। अब होस्ट बेस्ड में क्या था, जितने भी बाहर से पैकेट आ रहे थे, सपोज कोई हैकर किसी पैकेट के थ्रू एंटर होने की कोशिश कर रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटी थी, तो वो क्या करता था होस्ट बेस्ड, वो उसी टाइम पे अलर्ट जनरेट करके एडमिनिस्ट्रेटर को भेज देता था कि सस्पिशियस एक्टिविटीज है, इसको चेक कर लो। अब सेकंड आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड। कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे होंगे हमारे नेटवर्क में, और नेटवर्क के यूजर्स को अवेलेबल नहीं होंगे, उनको नहीं पता लगेगा कि डिफरेंट सिस्टम्स पे दैट दे आर अवेलेबल। और ये एक्सटर्नल के लिए नहीं, इंटरनल के लिए भी था। हो सकता है हमारे नेटवर्क में जो ऑथराइज्ड यूजर है वो ही इंट्रूडर हो, वो जो आउटबाउंड पैकेट भेज रहा है उनमें कोई लिंक भेज रहा हो जिसके थ्रू बाहर वाला कोई हमारे सिस्टम में ज्वाइन कर जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करते थे, ये एक्सटर्नल को तो चेक करते ही करते थे, बल्कि इंटरनल को, इंटरनल यूजर्स पे भी नजर रखते थे। क्लियर? एंड हाइड इट्स प्रेजेंट फ्रॉम द नेटवर्क, अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखते थे नेटवर्क में। पुराने वाले सिस्टम पे क्या होता था, अगर यहाँ से कोई पैकेट जाता था वो उसको नहीं पता लगता था, वो सिर्फ इनकमिंग पैकेट्स पे फोकस करता था, इनबाउंड पे। बट इस केस में वो इन और आउटबाउंड दोनों पे देखता था, किसी को पता भी नहीं होता था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। और अगर यहाँ से कोई लिंक बाहर भेजते थे हम लोग कि उस लिंक के थ्रू कोई इंट्रूडर एंटर कर जाए, तो वो उस पर भी नजर रखते थे। क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, network intrusion detection system. The third one is network intrusion detection system. Network intrusion detection system are set up at a planned point within the network to examine traffic from all the devices on the network. अब ये जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम थे, ये नेटवर्क पे एस्टेब्लिश कर देते थे, पूरे नेटवर्क का ख्याल रखते थे। इट परफॉर्म्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पासिंग ट्रैफिक ऑन द एंटायर सबनेट एंड मशीन and matches the traffic that is passed on the subnet to the collection of known attacks. सबनेट का मतलब है जितने भी इंटरनली सभी किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो इंटरनल ट्रैफिक जा रहा है, इंटरनल ट्रैफिक का मतलब है एक नेटवर्क है उसमें 10 सिस्टम है, अगर वो 10 सिस्टम आपस में कोई भी ट्रैफिक सेंड कर रहे हैं, आपस में कोई भी मैसेज कर रहे हैं, ये नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम उस ट्रैफिक पे भी नजर रखता था। इंटरनल ट्रैफिक, ना नेटवर्क से बाहर घुस जा रहा, ना बाहर से नेटवर्क पे घुस आ रहा, सिर्फ नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये उस पर भी नजर रखता था, उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। क्लियर? Once an attack is identified or abnormal behavior is observed, the alert can be sent to the administrator. जब इसको कोई भी abnormal behavior लगता था कि कोई different suspicious packets inside the network आपस में सेंड हो रहे हैं,
तो अलर्ट जनरेट कर देता है। एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज इंस्टॉलिंग इट ऑन द सबनेट वेयर firewalls are located in order to see if someone is trying crack the firewall। कहता एग्जांपल इज कि जैसे फायरवॉल का कंसेप्ट तुम्हें आगे जाके आ जाएगा। इसको इंस्टॉल कर दो नेटवर्क के ऊपर, और जहाँ पे फायरवॉल्स लोकेटेड है, और सीज इफ समवन इज ट्राइंग टू क्रैक द फायरवॉल्स, कि कोई फायरवॉल्स को क्रैक करके सिस्टम के अंदर आ रहा हो तो फायरवॉल सेम टाइम पे उसको बता देती है। फायरवॉल जो है ना, तुम्हारे लैपटॉप्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, उसमें भी फायरवॉल की ऑप्शन होती है। फायरवॉल इट्स वर्क्स लाइक अ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। होता क्या है, फायरवॉल पे भी जितने नंबर ऑफ पैकेट्स है वो फिल्टर होके फायरवॉल्स के थ्रू ही अंदर आते हैं। क्लियर? ये एग्जांपल था उसका। तो नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्लियर है? नेटवर्क के ऊपर अप्लाई कर देना, प्लस नेटवर्क की इंटरनल कम्युनिकेशन के ऊपर भी नजर रखना। इंटरनली तो नहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही, अगर हो रही हैं तो सेम टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर को अलर्ट जनरेट कर देना। क्लियर? एनीथिंग यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। Okay, now let's move to the last topic, that is honeypots. In computer security term, a cyber honeypot works in a similar way, baiting a trap for hackers. बेसिकली हम लोग एक ट्रैप बिछा देते हैं नेटवर्क में हैकर्स के लिए। हैकर आते हैं हमारे नेटवर्क में हमारा सिस्टम हैक करने के लिए, बट हनीपोट्स हम लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं वो हैकर्स को कैप्चर करने के लिए। It's a sacrificial computer system that's intended to attract cyber attacks like a decoy. It mimics a target for hackers and uses their intrusion attempts to gain information about the cyber criminals and the way they are operating, or distract them from the other targets। कहता हनी बॉट्स क्या है, बेसिकली हम लोग हनी बॉट्स एस्टेब्लिश कर देते हैं, दे लुक्स लाइक अ सिस्टम्स, एंड द सिस्टम्स वो करते हैं वो हैकर्स के डेटा को, हैकर्स नेटवर्क में आता है हमारे वाले डेटा को एक्सेस करने के लिए, बट वेन एवर अ हैकर अटैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो वो क्या करते हैं, हैकर के डेटा को गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, टू गेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइबर क्रिमिनल, कि वो हैकर कहाँ से है, किस आईपी से रजिस्टर किया हुआ है, कौन सी हमारी एक्टिविटीज हैं जिन पे वो अटैक कर रहा है। क्लियर? How the honeypots works? The honeypot looks like a real computer system with applications and data, fooling cyber criminals into thinking that it's a legitimate target। वो सेम एक कंप्यूटर की तरह होंगे जिसमें एप्लीकेशंस भी हैं, डाटा भी है, और वो साइबर क्रिमिनल्स को पागल बनाते हैं, फूल बनाते हैं। वो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये सिस्टम है, वो सिस्टम पे अटैक कर देते हैं। जब वो वहां पे अटैक कर देते हैं तो हनीपॉट्स क्या करते हैं, वो अटैकर की इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अ हनीपॉट कुड मिमिक अ कंपनीज कस्टमर बिलिंग सिस्टम। सपोज एक सिस्टम बना दिया हम लोगों ने जिसमें कस्टमर बिलिंग सिस्टम है, वो हम लोगों ने बना के रख दिया हनीपॉट। अ फ्रीक्वेंट टारगेट ऑफ अटैक, जो नॉर्मल अटैकर जिस पे अटैक करते हैं, क्यों, बिलिंग सिस्टम पे सभी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होंगे। फॉर क्रिमिनल्स हु वांट टू फाइंड द क्रेडिट कार्ड नंबर्स, वंस द हैकर आर इन, दे कैन बी ट्रैक्ड एंड देयर बिहेवियर असेस्ड फॉर क्लू ऑन हाउ टू मेक द रियल नेटवर्क मोर सिक्योर। अब होता क्या है, जब अटैकर वहां उस सिस्टम पे अटैक करता है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए, हम लोगों ने बना दिया ये कस्टमर बिलिंग सिस्टम है, तो अटैकर उसी पे अटैक करेगा कि क्रेडिट कार्ड नंबर से इनके फाइंड आउट करते हैं। जब वो उस सिस्टम पे एंटर करता है तो मिलता तो उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसकी वाली इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं कि ये है कौन, किस आईपी से रजिस्टर किया और क्या करना चाहता था। क्लियर? Honeypots are made attractive to the attackers by building in a deliberately security vulnerabilities। कहता हम लोग करते क्या है, पहले से उसको वल्नरेबल ही बनाते हैं। वल्नरेबल मतलब जो इजीली क्रैक की जा सके। हम लोग इस तरह का सिस्टम बनाते हैं कि वो इजीली क्रैक करके उसमें एंटर कर जाए। फॉर इंस्टांस, अ हनी पॉट माइट हैव पॉट्स दैट रिस्पॉन्ड अ पॉट स्कैन और वीक पासवर्ड। वही जो तुम्हें भी बताया, यहाँ कोई वीक पासवर्ड रख देते हैं हम लोग उसका, कि वल्नरेबल बनाते हैं हम लोग उसको, कि हैकर आए इजीली उसको हैक कर ले और उसमें एंटर कर जाए। बिकॉज हम लोग, हमारा मेन फोकस यही होता है कि हैकर उसमें एंटर कर जाए। हैकर एंटर कर गया, हम लोग हैकर की इंफॉर्मेशन को गेन कर लेंगे। क्लियर? vulnerable ports might be left open to entire attackers into the honeypot environment rather than the more secure live network। हम लोग जितनी भी पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स के थ्रू अटैकर एंटर करेगा या जिनको हैक करेगा, उनको हम वीक बना के रखते हैं। हम लोग ने एक जाल बिछाया होता है हनीपॉट के थ्रू कि वो खुद आए,
इजीली अंदर भी आ जाए, उसको लगे कि मैंने क्रैक भी कर लिया सिस्टम, एंटर भी कर गया, बट वो एंटर करने के बाद फंस जाए। फंसेगा कैसे? हम लोग उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। क्लियर? A honeypot isn't set up to address a specific problem like a firewall or antivirus. Instead, it's an information tool that can help you understand existing threats to your business and spot the emergency of new threats. कहता है ये फायरवॉल की तरह काम नहीं करता है एंटीवायरस की तरह कि उनको रोक के सिंगल सिंगल, जैसे फायरवॉल का काम है फिल्टरिंग की और बंद कर दिया, एंटीवायरस का काम है कोई वायरस है उसको डिलीट कर दिया। हनी पॉट से हमें ये पता लगता है कि जब कोई अटैकर है उस सिस्टम में ऐड आ गया तो वो कौन कौन सी अटैक अटेम्प्ट्स कर रहा है, मतलब किस किस तरह के अटैक्स हमारे सिस्टम को हो सकते हैं, वो कौन कौन से अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन सा डेटा स्टील करने की कोशिश कर रहा है। तो हनी पोर्ट से हमें ये लग जाता है पता कि फर्दर इन द नेक्स्ट अटैकर कैटेगरीज में वो कौन कौन से अटैक्स को कर सकता है हमारे उसमें फ्यूचर में जो जो अटैक्स कर सकता है हमें वो सारा लग जाता है पता। क्लियर? बिकॉज वो उस सिस्टम में एंटर किया, एंटर करने के बाद वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, मिलेगा उसको कुछ नहीं, बट हमें वो एक्टिविटीज का लग जाएगा पता कि किस तरह ये अटैक करना चाह रहा था, कौन कौन से डेटा पे अटैक करना चाह रहा था। क्लियर? With the intelligence obtained from a honeypot, security efforts can be prioritized and focused. अब honeypot से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसने इस तरह अटैक करना शुरू किया था, तो हम लोग उन्हीं एरियाज को और सिक्योर कर लेंगे, हमें लग जाएगा पता कि ये करना चाहता था ये। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। यहां तक ही हम लोगों ने करना था। इफ एनी इशू इज देयर तो जस्ट unmute yourself and you can ask for any query. Okay, that's great ki everything is clear to everyone. Okay, so now it's time for a poll. Just wait for a minute. I'm going to publish a first poll. Okay, I think the poll is visible on your screens. Just go for it. Okay, now the poll number 2 is, uh, I think, they're available on your screens.
Okay. Uh, Now the poll 3 is visible on your screens. Okay. The last poll is there.